अभी कुछ देर पहले ही मैं और चिराग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा वीडियो बनाना है। हमने सोचा कि चेल्सी बेस्ट मोमेंट्स ऑफ 2021 का वीडियो बनाए, और जिसमें मैं रोमेलू लुकाकु's रिटर्न टू चेल्सी को प्रॉब्ली थर्ड या फोर्थ रखने वाला था, और अब ये हो गया। Yes, guys, as you must have seen, Romelu Lukaku's latest comments as posted by Fabrizio Romano. Diving straight into it, Chirag, your thoughts? सबसे पहले मैं डायरेक्टली इस ट्वीट की तरफ जाना चाहूंगा विदाउट सेइंग इनफ. As you can read, first tweet says, now it's the right time to share my feelings. I have always said that I have Inter in my heart. I know I will return to Inter. I really hope so. I am in love with Italy. This is the right moment to talk and let people know what really happened. So यहाँ तक ट्वीट होता तो चलता. The way it got forward आगे. I really hope from bottom of my heart to return to Inter, not at the end of my career, but when I'm still at the top of the level to win more together. यहाँ से चीजें got spicy जब उसने कहा not at the end of my career. I want to apologize to the Inter fan. Timing of my words was wrong. Why did you? What you did for me will remain forever, obviously. And the last tweet, as I quote, physically I am fine, but I am not happy with the situation at Chelsea. Tuchel has chosen to play with another system. I won't give up. I'll be professional. I'm not happy with the situation, but I am professional and I can't give up. Professional. Well, are you really professional? Exactly. How Because is this professional? जब what तुम sort of definition of professional is just one day before the opening of the transfer window, only a few months into your new club, which has paid 97 million. They have broken that club record fees for a player, and according to you, it's professional to come out now and speak all stuff that you're not happy. ठीक है, a player not being happy is normal, but probably there are many other ways you can sort it out. नहीं. Not being happy is different. Lukaku for me is the definition of how a real club player is. वो बंदा 2012 में चेल्सी आया था because he had a dream that he wants to play for this club. It was his dream club. Then he was at his peak at Inter Milan and उस बंदे ने बोल दिया था मैं क्लब नहीं छोड़ रहा, but he left the club for only one club. That was Chelsea. They broke the transfer record for you. They brought you back and कैसे तू सिस्टम में फिट नहीं होता. चलो आई कंप्लीटली एग्री, सिस्टम अलग है, एवरीथिंग इज फाइन, बट टूकल इज गिविंग यू चांसेस. ऐसा कौन सा दिन था कि he was And 100% bro, fit and you were dropped from the team? isn't the definition of a world class player is that he should fit into every system. A world class player is one that mends his way, battles his way into different systems by different managers. So I don't really get this. ठीक है, if he has a system issue with Thomas Tuchel, probably address it to the manager. इतना कुछ publicly बोलना, as I mentioned, one day before the transfer market, only a few months into the The return of your. only allegations I am seeing right now is कि ये हो सकता है एस्टन विला से पहले की गेम की बात हो, बिफोर द एस्टन विला गेम, बट क्या फर्क पड़ जाएगा एस्टन विला गेम के बाद भी? आई रियली डोंट नो, क्योंकि उस टाइम वो फिट ही नहीं था. अगर तू अक्टूबर से खुद फिट नहीं है, यू आर नॉट इवन फिट इनफ टू प्ले फॉर द टीम, तो तुम हाउ आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट कि तुम्हारे अराउंड मैनेजर गेम खिलाएगा? एंड वन थिंग जो हम चेल्सी फैंस क्रिटिसाइज कर रहे थे, दैट टूकल वाज फोर्सिंग हिमसेल्फ टू प्ले अराउंड लुकाकू, राइट? तो अब तेरे लिए मैनेजर और क्या करे इससे ज्यादा? हियर इफ ही इज एक्चुअली हिंटिंग फॉर अ बैटल अगेंस्ट टूकल, आई विल बैक टूकल. लाइक हमने पहले प्लेयर्स को बैक करा है जब मैनेजर्स को सैक करने की बात आई थी, बट आई वांट दैट प्लेयर सुप्रीमेसी टू एंड. आई वांट टू बैक टूकल इसमें. वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था तेरे लिए. बट आई डोंट नो, आई स्टिल फील सो कि एंड में जो उसने लाइन बोली कि आई विल बी प्रोफेशनल एंड आई विल बी फाइटिंग फॉर माई प्लेस, ही डज दैट बिकॉज कल की गेम में चेल्सी की जो कल की गेम थी व्हेन दे ड्रू अगेंस्ट ब्राइटन, लुकाकू वाज प्लेइंग ग्रेट फॉर मी. लाइक जो वो कर सकता था वो बंदा कर रहा था, जितना वो दे सकता था. वो डिफेंसिवली आके डाइविंग हेडर मार रहा है अपने खुद के बॉक्स में. इफ यू आर नॉट हैप्पी तो तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तो मेरे हिसाब से पहले तो मुझे स्टेटमेंट और प्लेयर मैच नहीं कर रहे. आई वांट दिस टू बी एन अप्रैल फूल प्रैंक ऑन मी कि ऐसा हुआ हाँ, है. बट आई रियली होप कि अभी 2 घंटे 3 घंटे बाद हम लोग का यहाँ पर मजाक हो जाए कि ये सब एक कुछ हैक हो गया था फब्रिजियो का अकाउंट एंड ऑल, बिकॉज हम आई वुडंट रूल मैं दैट आउट. फूल बनने को तैयार हूँ यूट्यूब पे.
हाँ, because मैंने जब ये स्टेटमेंट पढ़ा, आई एब्सोल्युटली कुडंट बिलीव इट. दिस वाज आउट ऑफ नोवेयर. चलो कोई और प्लेयर से ये आता, समवन हु इज नॉट ये गेटिंग द बाकली से गेम आता, टाइम. ये बाकली से आता, मैं एक्सपेक्ट कर ये लेता. बात, हाँ, इनफैक्ट समवन, सम प्लेयर्स नॉट ये गेटिंग द गेम मैं टाइम, कह रहा सम. हूँ, इवन मैं काय हैवर्ट्स से एक्सपेक्ट कर लेता ये बात. काय हैवर्ट्स वाज हाँ, आल्सो मेजर साइनिंग फॉर चेल्सी, लेकिन मैं उससे एक्सपेक्ट कर लेता ये बात, लेकिन नेवर फ्रॉम अ प्लेयर लाइक लुकाकू हु वी ऑल वर मतलब व्हाट ब्रैगिंग अबाउट रीजन, द ड्रॉप वर ही रीजन did. डज. ठीक है, ही हैज अ कनेक्शन विद इंटर, तो मतलब दिस इज नन ऑफ चेल्सीज कंसर्न. पर्सनल टर्म्स अग्री नहीं करता. मतलब एट द मोमेंट यू आर प्लेइंग एट अ क्लब जिसके तुम हाईएस्ट अर्नर हो, आई थिंक 325,000 pounds a week, if I'm not wrong, or is it 295? Regardless, he's the highest earner, and Golo Kante से ज्यादा he's earning. सारे थियागो सिल्वा, मेसन माउंट, सब लोग से ज्यादा he's earning. We broke the club record fee for him. And then एक क्राइसिस मोमेंट में, चेल्सी के लिए क्राइसिस मोमेंट चल रहा है फॉर श्योर. मिडवे थ्रू द सीजन वी आर ड्रॉपिंग पॉइंट्स लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. उसमें कमिंग आउट एंड सेइंग दिस, while ये season के लिए we could say that Romelu Lukaku was the head of our project, all our football was going to be played through him. According to me, उसने जो वर्ड प्रोफेशनल लिखा है उसको वो खुद के ट्वीट में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. Definitely, this is not acceptable from a player like Lukaku at all. And I really want कि things should unfold, then we will be clear कि किस context में ये बात बोली गई है and कब बोली गई है exactly. क्योंकि obviously I know कि बीच में वो drop हो रहा था because he was 60% fit, 70% fit, तो उसको तुकल start नहीं कर रहा था. I expect that उस time पे, but I really want to know कि what unfolds, and Lukaku should come in public and now say कि क्या होने वाला है. Because एक situation जो मेरे दिमाग में अभी भी चल रही है, player and manager वाली, striker and manager वाली, was Aubameyang and Arteta. आई रियली होप ऐसी कोई सिचुएशन इतनी खराब ना हो जाए कि टूकल और लुकाकू के इंटरनल मैटर्स में प्रॉब्लम आए एंड वी विल बी ड्रॉपिंग लुकाकू बिकॉज ही इज आवर मेन गाय. तुम गोल की बात करते हो चेल्सी में, यू हैव टू लुक लुकाकू, राइट? सो आई रियली होप कि ऐसा कुछ ना हो कि हमें ऐसी सिचुएशन में जाना पड़े. बट आई Chirag, do you really रियली वांट टू want, सी. do you, जितना भी वो अच्छा हो, do you really want a player who's clearly not in love with the club, whose heart is clearly somewhere else? Do you really want him to be starting for your team, as good as नो he might be? बट आई रियली वांट टू नो द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड, क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हमें. क्योंकि जैसा कि लुकाकू है, आई स्टिल कैन नॉट बिलीव कि उसने इस टर्म पे आके, इस सिचुएशन में आके ये बात बोल दी. आई वांट हिम टू क्लियर थिंग्स आउट. Yes, let's hope there's clarity from the end of Romelu Lukaku, because at the moment these comments seem very vague. They seem uncalled for. They seem to an extent very unrealistic to me. But okay, let's see what unfolds, what happens in the next few hours. We will keep you all updated over at the channel. This was just a very short reaction from me and Chirag. Completely, you could say, uh, astonished, completely taken aback by the comments of Romelu Lukaku as disclosed by Fabrizio Romano. But ठीक है, thank you for listening to the end. Make sure to drop in गाइस your गाइस views. गाइस, या जस्ट मैं वन कर देता मोर हूँ चिराग. रिक्वेस्ट. हाँ हाँ. कोई बात नहीं, मैं देता हूँ. ठीक है, तो जो हमारे चिराग भाई साहब है, इनने अपनी खुद की एक नई चैनल बनाई है. He's not leaving this one. He's still gonna be here. He's still gonna be डेफिनेटली, our. आई जस्ट वांटेड टू क्लियर प्रमोशन हाँ, से हाँ, पहले ज्यादा आई वांटेड टू जिनने क्लियर टू आवर इनकी फैंस जिनने कि इनका नया वीडियो मैं देखा फुटबॉल है, पार्लियामेंट just नहीं to छोड़ clear रहा हूँ. clear it out, he's not leaving the football parliament. He's still here. He's still a main man with me, and he's just made his own channel to discover newer ways of content creation. It's called football. क्या क्या था दूसरा वाला? मेडिकोज. मेडिको, फुटबॉल मेडिको. तो ठीक है, लिंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम. तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू फुटबॉल मेडिको. इफ यू नॉट सब्सक्राइब्ड over here, make sure to subscribe here as well. And for more top quality football content, keep listening to the Football Parliament.